हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड आज एक अच्छा केस डिस्कस करते हैं, राइट? तो सम टाइम बैक वन लेडी कॉल्ड मी अप फॉर काउंसलिंग, राइट? सो मीनिंग देयर बाय दैट क्लिनिकल सिचुएशन ये है कि बोथ the pregnant lady and her husband, they are around 39 years of an age, right? And absolutely everything was good until something around 34 weeks or so, right? When the fetal long limbs, they started to show some sort of an growth lag, right? So then they picked up that at 32 weeks or 33 weeks the limbs are short, right? Now how do you counsel and all those stuff and blah blah blah, right? तो इसमें कहानी ये है कि the gynecologist was very happy, the referring physician was very happy with the ultrasound. So at 39 years of an age, she was not being offered any of the serum screenings, normal blood screenings that we can offer, like double marker or a quadruple marker, or we can do an NIPT, right? Because of the advanced maternal age at 39, right? And that is how it is. And suddenly at 32 weeks and in third trimester, we are identifying that the limbs length is shortened, right? So now what could be the possibilities and how can we help them out, right? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे माँ की एज बढ़ती है और वैसे वैसे एनिप्लॉइडी मीनिंग देयर बाय कि गुणसूत्र की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? सो व्हाट वी आइडेंटिफाई कि 35 से लेकर 38 ईयर्स के बीच में थोड़ी सी रिस्क बढ़ती है, बट मोर देन 38 ईयर्स ऑफ एज वी डेफिनेटली would press upon to do some more definitive investigations like NIPT or amnio if there is some other abnormalities in the ultrasound, right? So 35 years के नीचे आप सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट से भी काम चला सकते हैं और अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं। 38 ईयर्स के बाद आपको कुछ एनिप्लॉइडी या डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसको आपको रूल आउट करना ही चाहिए, राइट? लेकिन जैसे जैसे फादर की एज ही बढ़ जाती है, इसको एडवांस पैटर्नल एज बोलते हैं, तो उसमें भी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉइंट म्यूटेशंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको हम स्केलेटल डिस्प्लेसियाज बोलते हैं, राइट? तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यूजुअली लीथल स्केलेटल डिस्प्लेसियाज 5-6 वैरायटी के होते हैं, लाइक होमोजाइगस अकोंड्रोप्लेजिया, थैलेडोफोरिक डिस्प्लेसियाज। तो यूजुअली इनका डायग्नोसिस तो 20 हफ्ते के नीचे बन जाता है, राइट? So meaning thereby that a good ultrasonologist or a good ultrasound can definitely pick up a lethal skeletal dysplasia in less than 20 weeks. But heterozygous achondroplasia, right, hypochondroplasia, pseudo-hypochondroplasia, mild micromelia, ये सब autosomal dominant होते हैं और point mutations होते हैं, and then they are linked with the advanced paternal age. इन सब की डायग्नोसिस लेट सेकंड और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में ही पता चलती है, right? So meaning thereby at 20 weeks or 20 to 20 weeks level 2, 24 weeks at fetal echo, and at 26-28 weeks the early dopplers, they might be showing absolutely almost in normal range. The limb lengths would be normal, but they start to show some stagnation in the late second and the early third trimester, right? So both the husband and the wife, they were at 39 years of an age, पहला। दूसरा, कोई डाउन सिंड्रोम के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए थे, और स्केलेटल डिस्प्लेसिया अगर होता है बेबी में तो हम फुट लेंथ और फीमर लेंथ का जो रेशो होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी कैन ट्राई टू लुक अराउंड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, कि जो लंबर स्पाइन होती है उसकी ग्रेजुअल वाइडनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है, then we can have a trident hands, then we can have something else also, then we can have flaring of the iliac crests or iliac wings also. So there are some subtle findings, skeletal findings, that we try to pick it up on the ultrasound so as to see that it is a skeletal dysplasia or what. But the counseling becomes very difficult if the mother at 39 is not being investigated on the lines of Down syndrome, as a matter of fact. Okay, so at 32 weeks or 34 weeks, at 1800 gram baby, it is really very difficult to really counsel and to tell them what could be the sort of possibilities, right? तो डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी भी 1% हो जाती है बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड मैटरनल एज, और स्केलेटल डिस्प्लेसिया होने की पॉसिबिलिटी भी 1% हो जाती है बिकॉज ऑफ द एडवांस्ड पैटर्नल एज, राइट? और दूसरा 5 से 6% ये भी हो सकता है कि बेबी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट हो।
since we are doing all this telephonic conversation, so probably I don't have any idea about the mid parental height. I don't have any idea about the height of the father and the mother, and what is the stature. And so, meaning thereby, we can have a small for gestational age or a constitutionally short stature in something around 5 to 6% of the cases. So that is how it is. So this could be constitutionally short, which is even more common. Then comes the aneuploidy, which is a Down syndrome, and then comes the non-lethal skeletal dysplasias because of the advanced paternal age. So the counseling is very very varied and different and difficult to become, meaning thereby that it is very very variable depending upon the clinical situation at hand, right? Thank you very much for your patient listening.